firearm at the two National Guard members. So at that time, there were other National Guard members that were in the area. They heard the gunfire. They actually were able to intervene and to kind of hold down the suspect after he had been shot on the ground until law enforcement got there within moments. And he was shot by a National Guard. At this point, we're still investigating exactly who shot that individual. It's not clear at this time. Were there DC policemen in the area? We don't know what kind of weapon. There was DC police. It happened right in front of the Metro, although there is no indication that the perpetrator was on the Metro. So there's Metro Transit Police in the area, and obviously being on 17th Street by the White House, Uniform Division Secret Service were in the immediate area as well. What kind of weapon the alleged perpetrator used? We do not know at this time. Still in the We're going to be able to take a couple more. Has been able to question the suspect, or is his condition so severe that you haven't been able to? Sure. And so as I said, we're very preliminary in the investigation, so we're looking into all aspects of who the individual is, his connections. At this time, he's still in the hospital receiving treatment. And I would just like, I would just like to add, the reason that this suspect is in custody is because of the bravery of the men and women of the National Guard who responded due to their extensive training to secure American lives today. There was not any further injury and any further shootings. We should highlight the fact that the men and women of law enforcement, the interagency, the Department of War, and the National Guard executed their training with great precision today and prevented an even greater tragedy from befalling us. These National Guardsmen are heroes, and we must pray for their safety and their speedy recovery. And as the Chief said, we are in the preliminary stages of this investigation. We will run down every single lead, every piece of evidence. This is the power of the U.S. government at its best at the state, local, and federal level. That is why this interagency group is standing behind us to assure America and the world that we will continue to keep D.C. safe. And thankfully, we have Metropolitan Police Department, the National Guardsmen, federal agents, and the Department of Justice and the Attorney General willing to prosecute the mission to keep Americans safe. And President Trump has rightly stated that this heinous act will be investigated, and he has thanked the National Guardsmen and women and the men and women of law enforcement. Did the suspect say anything at the time? Why did the West Virginia governor say that? वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के बाद अमरीकी सिक्योरिटी काम की प्रेस ब्रीफिंग में आप मुलाहिजा कर रहे थे। व्हाइट हाउस के बाहर 2 अमरीकी फौजियों को गोली मारी गई, जख्मी हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के फौरी बाद व्हाइट हाउस बंद करके इलाके को घेरे में ले लिया गया है। दोनों जख्मी एहलकारों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड से है, ये कहना है अमरीकी मीडिया का। आपको बताएं, व्हाइट हाउस के बाहर 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मारी गई, हुकाम ने बताया। फायरिंग के वाक़े में जख्मी दोनों नेशनल गार्ड्स की हालत तशवीशनाक है। आपको बताएं कि गुफ्तगू कर रहे थे अमरीकी व्हाइट हाउस के बाहर 2 अमरीकी फौजियों को गोली मारी गई है, जख्मी हमलावर गिरफ्तार है। फायरिंग के फौरी बाद व्हाइट हाउस बंद करके इलाके को घेर में ले लिया गया है। दोनों जख्मी एहलकारों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड से है, ये कहना है अमरीकी मीडिया का। जख्मी एहलकारों की हलाकत से मुतालिक मुतज़ाद इतलात मिली हैं और गवर्नर वेस्ट वर्जीनिया ने पहले एक्स पर दोनों एहलकारों की हलाकत का बयान दिया था। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर भी बयान सामने आया है। फायरिंग से नेशनल गार्ड के 2 एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं, हमलावर शदीद जख्मी हैं, उसे करार वाकई सजा दी जाएगी। जख्मी एहलकारों और हमलावर को अलग अलग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खुदा नेशनल गार्ड्स और फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को महफूज रखे। मैं और मेरा सदारती अमला अजीम अफवाज के साथ खड़ा है। हमलावर शदीद जख्मी है, इसे करार वाकई सजा दी जाएगी। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में जराइम में इजाफे पर नेशनल गार्ड को तैनात किया था। अमरीकी वजीर जंग का फायरिंग के बाद मजीद 500 फौजी वाशिंगटन में तैनात करने का ऐलान। सदर ट्रंप की हिदायत पर मजीद फौजी तैनात करें, ये कहना है अमरीकी वजीर का। आपको बताएं कि व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के बाद अमरीकी सिक्योरिटी काम ने भी प्रेस ब्रीफिंग दी। Travel the world without leaving Dubai. Step aboard the legendary Queen Elizabeth II for around the world in 80 days. Each evening, savor a 3-course dinner and drink. Inspired by iconic ports, world